कॉर्न सैलेड बना रही थी और मैंने ऑलरेडी लगे लगाए कट में फिर से कट मार लिया है। देखो जब मुझे नहीं पता आप लोगों को देखेगा नहीं कट देखेगा, बट यहाँ ऑलरेडी कट लगा था, मैं फिर से कट मार लिया। मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, मतलब मैंने कट लगे लगाए थे दोबारा कट मार लिया है। अब दीदी नाचेंगी जगह जगह घूम के, दीदी हंसेंगी। दीदी चीज़ करो, चीज़ यूट्यूब पर डालूंगी मैं, सिस्टर आफ्टर स्टडिंग 4 hours on PW। मैंने खाना नहीं खाया ना, मैंने फिजिक्स पढ़ रही हूँ पिछले 4 घंटों से। हे भाई बंद कर दे। क्यों? क्या करोगे तुम इसका? यूट्यूब पे डालूंगी, व्यूज आएंगे लाखों में। कौन देखेगा? तेरे को कोई नहीं देखेगा, मेरे चैनल को देखेंगे ना सब। भूख लगी आपको? अब तो दीदी को भूख लगी। मेरे 567 सब्सक्राइबर्स हैं, ओके, सो 567 लोग देखेंगे। चली गई दीदी आगरा। तो यही था हमारा आज का व्लॉग। दीदी आगरा जाएंगी, और आगरा इसलिए जाएंगी क्योंकि आगरा में पागल खाना है, बस इसलिए आगरा जाएंगे, ताजमहल देखने नहीं जा रही। बाय बाय बाय। So here is the end of day 1. I studied for 6 hours 30 minutes and I completed 2 tasks more than my to-do list. My to-do list had 4 tasks. Okay, and I completed 6 tasks, which is quite proud. I'm quite proud of myself. And there are a lot of things that in the syllabus that I need to cover, and it's never gonna end. I'm kind of scared because if I, become really good in academics, will I lose all my hobbies? Because being too good at academics doesn't give you time for hobbies, and I don't want to do that. Second thing, because I didn't have time to do any of my hobbies, I just did some of the physical activities, but I am trying to learn guitar too, and I do drawing too, and I also play volleyball, and I also go to school. But currently my summer vacations are going on, so volleyball I play in park too, but I'm not going because I don't have time for that. So I'm quite quitting all of my hobbies. I listen to really less music. I didn't watch any of the K-dramas and all that I was currently watching. I cut off most of the things. Social media I cut on. It's just YouTube, so I'm getting things through YouTube, but I'm using it for my education purposes only. So that's it. Let's see day 2.